welcome to this video. Today topic is how we will solve those questions having any three of these words: direct proportion, directly proportional, varies directly. Before I start, kindly subscribe my channel. Okay, question number one is that if y is directly proportional to x, and if y equal to 6, then x is equal to 2. Now, in this question, y is directly proportional. So you will make an equation y is equal to, or we can have this symbol as well, that y is directly proportional to x. ये जो साइन है, ये साइन जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, एज इट इज गिवन कि जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस साइन को इक्वलिटी में चेंज करना होता है, तो इसकी जगह आप इक्वल टू करें और साथ एक के आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है x के साथ. अच्छा, ये जो k होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक कांस्टेंट है. k इज अ कांस्टेंट. ये जब भी आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को आप चेंज करेंगे इक्वल टू के साइन में, तो आपको एक के जो है वो साथ ऐड करना पड़ता है जो इससे मल्टीप्लाई होता है. ओके, अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी मेन इक्वेशन है. y इज इक्वल टू के एक्स. अच्छा, अब आगे इसमें y इक्वल टू 6 और x की वैल्यू 2 जो है वो गिवन है. सो जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. y is 6, k will stay as it is, and x is 2. Taking 2 to the left hand side, so k is equal to 3. So in these type of the question, the first step is always to find the value of k. Now in the A part, find an equation connecting x and y. So basically आपने जो k find आप कर लेते हो, आपने उसको इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू k की पुट करनी होती है. सो y इज इक्वल टू k आपका 3 है, सो 3 और ये x. सो ये हमारा मेन इस क्वेश्चन की मेन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 3x. ओके, अब पार्ट बी जो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10. नाउ इन दिस इक्वेशन जिसमें आपने k को अब पुट कर लिया है, आप इस इक्वेशन को यूज करें and you can get your answer. Now y is the question mark is equal to 3 and the value of x is 10. So y is equal to 30 is the second answer. Then in the C part, the value of y when x is equal to 9. So again, this equation, we will just put the value of x. So y is equal to 3 as it is, and the value of x is 9. So y is equal to 27. Start of the question is very important. If you will make the equation, the rest of the question is very simple. Okay, now next question number 2 is, given that y square is directly proportional to the cube of x, now make sure it is cube of x. Read the question carefully. अब y square है and it is proportional to the cube of x, so we will write x cube. यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, को सिंपल x लिख लेते हैं, तो कभी ये क्यूब ऑफ x होता है, कभी ये स्क्वायर ऑफ x होता है.
स्केयर रूट भी हो सकता है. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. Okay, as you know that the next step will be you will just change this sign into equal to sign and don't forget to multiply k with this x cube. k is a constant है जो फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपीयर हो जाएगा. ओके जी, एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि y इज ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि इसको लिखने का क्या इसका यहाँ पे मतलब था. ओके, y इज इक्वल टू 8 है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y इज 8 स्क्वायर, k रिमेन्स द सेम और x जो है ये हमारा 4 है, 4 क्यूब भी है. 64 is equal to k and 4 cube is 64. So take 64 to the left hand side, it will divide over there. Now just cancel these two, 64 times 1. So 1 is equal to k. Okay जी, अब next है कि find the value of y when x is equal to 9. अब ये है वो हमारी वो मेन इक्वेशन जिसमें हमने अब इस वैल्यू को पुट करना है. तो y square is equal to k is 1 and x is 9 and then there is a cube over there. Okay ji, now use your calculator to take the cube of 9. We will get y square is equal to 729. Okay, as we have to find the value of y, so we will take square root on both sides. So this will y is equal to, now square root of 729, it is 27, and as you know that whenever we take square root we always write plus minus with it. This is very important. But one condition was given in the question. As here you can see, it is given that y is always positive. Here you can see it is given in the question. So our final answer will be y is equal to plus 27 because it is given in the question that y is positive. स्क्वायर रूट में आप प्लस माइनस अब जरूर लिखेंगे बट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है हमने उसको फॉलो करना होता है. सो आंसर जो है y इज इक्वल टू प्लस 27. Okay, now moving to the next question, question number 3. Given that Q is directly proportional to P minus 1 whole square. So Q is directly proportional to P minus 1 whole square. ओके जी, नेक्स्ट स्टेप है कि Q इज इक्वल टू P माइनस 1 होल स्क्वायर और साथ जो है यू नो कि K जो है ये भी साथ जरूर आएगा. सो ये हमारी मेन इक्वेशन है. ओके, पार्ट ए जो है कि इन द ए पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 80. So just write the value of Q over here 80 and K is not known yet. So write K as it is and P तो question mark है, इसकी वैल्यू भी गिवन नहीं है तो इसको भी आप फिलहाल ऐसे ही रखें. अब दैट्स इट, आप इतना ही कर सकते थे इस स्टेप में कि K और P तो गिवन नहीं है तो ठीक है, एक वैल्यू Q की गिवन थी हमने प्लग इन कर लिए
अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करते हैं और इस पार्ट को हम यहीं पे यहाँ पे स्टॉप करते हैं. So we will go to the B part. Okay, in the B part you can see if Q is equal to 20. So in this equation again, in this one, we will put the values. Q is 20 is equal to K as it is. In the bracket is P value is 3. So we will write 3 minus 1 and then there is K. So 20 is equal to K or 2 square. Now as we know 2 square is 4. So 20 by 4 is equal to K. So 5 is equal to K. तो now you can see कि हमने जो B part से हमें K की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है. तो just put the value of K in A part to get your final answer. So 80 is equal to K is 5 and P minus 1 square. अच्छा, अब यहाँ 5 जो है वो इनसाइड मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज जो ब्रैकेट है स्केयर जो है उसको मल्टीप्लाई करने नहीं देगा. तो जस्ट टेक 5 टू लेफ्ट हैंड साइड. 80 over 5 is equal to p minus 1 स्केयर. इस स्केयर को अभी आप लेके चले, इसको अभी उस एक्सपेंड करने में भी आपने आना नहीं है. जस्ट कीप राइटिंग p minus 1 स्केयर. Okay, now do the cancellation. I think it is 5 times 1 is 5 and 5 times 16 is 80. So we have 16 is equal to p minus 1 whole square. Now we have to remove this square. So you know you will take the square root on both sides. So p 16 square root is plus minus 4 and square root will cancel each other. So p minus 1. Again, coming back to the main question, here you can see it is given in the question that P is always positive. P is always positive. So here again we will take only the positive value of 4. So 4 is equal to P minus 1, taking P to the left hand side, 1 to the left hand side. 4 plus 1 is equal to P. So 5 is equal to P is the final answer. That's it for today. Thank you for watching the video.